वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी सिस्टम का सब्सट्रैक्शन देखा बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाइनरी नंबर्स का डिवीजन लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम रूल्स लेंगे फर्स्ट बाइनरी नंबर के डिवीजन के लिए, देन उसके बाद एग्जांपल विच आर बेस्ड ऑन द बाइनरी डिवीजन, देन उसके बाद हम ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके हम रूल्स देखेंगे एंड उस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट विल सी द बाइनरी डिवीजन, सो विच इज़ द फोर्थ अरिथमेटिक फंक्शन। फर्स्ट विल सी द एडिशन of binary number system, second we'll see the subtraction of binary number system, third we'll see the multiplications of binary number, and this is the fourth arithmetic function which is the binary division. So there is a simple one rule is there in binary division. So the decimal number which is given in a problem, so that is converted into the first in binary number. Okay, then after that the main rule is that subtract the divisor from the dividend. ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है हमें जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। सब्सट्रैक्ट द डिविजर फ्रॉम द डिविडेंड एंड इफ नो बोरो इज जनरेटेड देन सेट द क्वोशंट टू बी अ लॉजिक 1, अदरवाइज इट विल बी अ लॉजिक 0। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हम जो सब्सट्रैक्शन करेंगे डिविजर एंड डिविडेंड का, ओके, in that this is the divisor and this is the dividend. So when we subtract that, if there is a borrow generated, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी सब्सट्रैक्शन होता है तो बोरो जनरेट होता है। ठीक है, एंड द डिफरेंस, these are the output of subtraction, difference and borrow. So whenever borrow is generated, suppose borrow is generated, so at that time the quotient, this quotient will be 1, otherwise if no borrow is generated means the result is 0, then the quotient will be a logic 0. Okay, so that is a simple rule in the binary division. Then we'll see the example so that these points are clear to you. So that is the first problem. Perform 1111 plus divide by 10. So this is the binary number which is given, and we have to divide this 4 times 1 divided by this 10. So start with the solution. First we have to convert this binary number into the decimal number. 1111 means it is a f in hexadecimal number, and in decimal number it is 15. So that is a 15 which is a decimal number for this binary number. Second number is 10, so 10 means 2 in the decimal number, so it is 2. Then after that we are solving this division, so write the number which is 1111, it is divided by second number that is 2 which is 10. ओके, तो यहाँ पे हमें बाइनरी डिवीजन लेना है, तो हमें बाइनरी डिवीजन या बाइनरी नंबर्स को ही यहाँ पे राइट करना है। आफ्टर दैट, सो फर्स्ट डिवाइड इट विद द 10. सो व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 10, सो राइट द 1 and 0. देन आफ्टर दैट सब्सट्रैक्ट दिस नंबर 11 minus this 10. So 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0. So that is the subtract the divisor from dividend, so that is this. Okay, then after that it is result is 0 1, so there is no borrow generated here. 1 minus 1 is 0. Okay, so no borrow is generated. So our rule is when there is a no borrow is generated, the quotient to be a logic 1, that's why this quotient is logic 1 here, and 1 minus 0 is 1, so no borrow is generated, so that quotient will be a logic 1, that's why we are writing a logic 1 here. After that we take the carry forward the next bit which is a 1, then again we subtract
this divisor and dividend. So this 1 minus 0 is 1, this 1 minus 1 is 0. So there is no borrow generated here. Again 1 minus 1 is 0, borrow is 0, no borrow is generated, and 1 minus 0 is 1, so no borrow is generated. So we are writing the 1 as a quotient, so that is the second one here. Then after that we are taking the next bit, carry forward the next bit, which is a 1. Again we are subtracting divisor from the dividend, so this will be a 1 minus 0 is 1, and second 1 minus 1 is 0. So again no borrow is generated in this case, because 1 minus 0 1, 1 minus 1 is 0, no borrow is generated. So the quotient will be a 1, and this is the remainder 0 1, which is a remainder, and this is the quotient. So in this way we solve the binary number division. So write down the final answer. Therefore quotient is 111, and you know that 111 means 7 in the decimal number system. So that's why the base of decimal number system is 10. So it is 7 as a 10, which is in decimal form, and write down the remainder. Remainder is 0 1. 0 1 is nothing but the 1 in decimal number system. So this is the required answer. So in final answer you have to write the quotient, which is obtained at the upper side, that is the quotient, and then write down the remainder, which is at the bottom side. So both are required in the final answer, quotient as well as remainder. ओके अगर आप ये नहीं लिखोगे तो यहाँ पे 1 मार्क्स आपका लेस होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप बाइनरी नंबर सिस्टम के जो डिविजन्स है, ठीक है, तो उसके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो. देयर इज़ ओनली वन रूल इज़ देयर. ठीक है, वो क्या है? इफ़ नो बोरो इज जनरेटेड सेट द क्वेश्चन टू बी लॉजिक 1. अगर कोई बोरो जनरेट नहीं होता है, सो एट दैट टाइम द क्वेश्चन विल बी 1, and when the borrow is generated, then it will be a quotient will be 0 is there. So that is a simple rule for binary division. Then we'll see the another problem which is based on the binary division. So in that we have to perform the binary division of this 30 divided by 2. Then we start with the solution. So in that first we'll convert this number 30, which is in decimal, into the equivalent binary form. So which is converted into the binary form, which is 4 times 1 0 is the binary form of the number 30. Second number is 3. So you know that the in 4-bit form 3 is written as 0011. So the 3 is converted into the binary number, because we are interested in binary number division. So that's why if the number is given in the decimal form, so we have to first convert into the binary number and then we divide it. So we take the division, write the first number 1 1 1 1 and is 0. 4 times 1 0 is there, and it is divided by 3. So 3 is nothing but the 1 1. So there is no need to write the zeros in the left hand side because it is a meaningless. Okay, this is 0011. You can write as it is, मीन्स ऐसे ही लिख सकते हो आप 0011. ठीक है, नहीं तो आपने 11 लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी पर्पज वी आर राइटिंग द 11 instead of writing 00. Then we start the division. So we are dividing with the 1 1. So write the 1 1. So again same method, we take the subtraction. Then this 1 minus 1, answer is 0. This 1, this minus 1, it is answer is 0. So 0 0, no borrow is generated. So at that time we have rule, if no borrow is generated, the quotient will be a 1. So we are writing the 1. But if
the borrow will be 1, so at that time we are taking the 0. Okay, so next we are taking the another bit, which is the next bit, as a 1. Then this is number 001. 001 means 1 in the decimal number system, and this 11 means 3. So this 1 cannot be divided by 3, because here 001 is less than 11. 001 means 1 and this is the 3. Okay, so 1 cannot be divided by, this 1 cannot be divided by 3, so that's why we are adding a 0. Means we have to take one more bit down and put the 0 in the quotient. मीन्स हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट बिट है, ठीक है, विच इज़ अ 1, दिस फोर्थ 1. ओके, वी आर टेकिंग दिस बिट एज अ नेक्स्ट बिट, मीन्स डाउन. सो फॉर दैट पर्पज वी आर राइटिंग द 0 एज अ क्वेश्चन. सो वी आर राइटिंग द 0. देन उसके बाद उसे हम डिवाइड करेंगे अगेन विद द 1 1. ओके, मीन्स ये भी क्या होगा यहाँ पे 3 है अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल नंबर में, एंड दिस इज ऑलरेडी अ 3. सो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0. मीन्स जैसे हम 3 माइनस 3 करेंगे नॉर्मल मेथड से, सो इट विल बी अ ऑल्सो 0. ठीक है, सो नो बोरो इज जनरेटेड, दैट्स वाई वी आर राइटिंग द 1 एज अ क्वेश्चन, जो हमारा रूल है. इफ नो बोरो इज जनरेटेड वी आर राइटिंग द 1, if borrow is generated we are writing a 0. Okay, and after that the last 0 will be taken as it is in the this quotient. So finally last 0 in the dividend that we have put in the quotient, so this last 0 is taken as a quotient, so that is the final quotient 1010. So we are writing the final answer, therefore quotient is equal to 1010, which is this, and the remainder is 0000, 4 times 0. So that is the required answer. So in this way you can solve the binary division for any binary number. Okay, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो बुक में प्रॉब्लम्स दिए बहुत सारे, आप ट्राई करो. ठीक है, उसमें जो मैंने अभी बताया वही एक रूल मेन है. ठीक है, सो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस आर एंड हियर, विच इज़ द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम. ठीक है, जो हमने अरिथमेटिक में देखा था वो मल्टीप्लिकेशन था सिंपल बाइनरी नंबर सिस्टम का. ठीक है, विच इज़ द बेस एज अ 2. ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है. अभी जो मल्टीप्लिकेशन हम ले रहे हैं वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, एंड यू नो दैट ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 8. सो फर्स्ट विल सी द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, how we can multiply the two octal numbers. So it has the basically 3 steps are there in the rule. So first step is convert the octal to the binary. First thing is that the given octal number we have to convert into the equivalent binary for both multiplier and multiplication for both the numbers. Suppose a multiplied by b is there, so a is converted into the binary number and b is again converted into the binary number. That is the first step. Second step, perform the simple binary multiplication. Okay, तो जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल्स देखे थे, सेम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हमें यहाँ पे यूज़ करना है. ठीक है, इन स्टेप नंबर 2 विच इज़ फॉर सिंपल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. एंड द थर्ड स्टेप इज आफ्टर परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन, वट एवर द आंसर इज यू गेट इन बाइनरी, कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट ऑक्टल. मीन्स थर्ड स्टेप में जो आपको आंसर मिलेगा, मीन्स बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, फाइनल आंसर, दैट आंसर इज इन बाइनरी फॉर्म. सो यू हैव टू कन्वर्ट द बाइनरी इनटू द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, बिकॉज दिस इज द ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन. सो वी आर इंटरेस्टेड दैट फाइनल आंसर विल बी इन द ऑक्टल नंबर और ऑक्टल नंबर सिस्टम. So that's why the answer is converted into from binary to the
octal number system. So these are the basically three rules of multiplication in octal number system. Okay, तो अभी हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, देन यू विल नो these rules. So first problem is perform 12 multiplied by 7. 12 is the octal number because the base of octal number system is 8, and second number is 7. It is also octal number, so we have to multiply 12 into 7. So we start with solution, start with the step 1. So step 1 says that convert both the octal number into the binary. ठीक है, तो आप लोगों को पता है टेबल, तो टेबल से आप हेल्प ले सकते हो. सो फर्स्ट नंबर इज 12. ओके, सो वी आर राइटिंग द इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर विच इज़ 1010. सेकंड नंबर इज 7. सो 7 इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर and then it is right here. So 7 means 0 111 is there. Okay, so these are the equivalent binary numbers for these octal numbers for 12 and 7. After that we start with the second step, which consists of simply multiplication of binary numbers. तो जो नंबर्स हमें बाइनरी नंबर में हमने कन्वर्ट किया है फर्स्ट स्टेप में ऑक्टल टू बाइनरी, वी हैव टू राइट दैट नंबर एंड टेक अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन. मीन जो रूल हमने मल्टीप्लिकेशन में लिए, अप्लाई दैट रूल्स एंड टेक द मल्टीप्लिकेशन. सो इन दैट राइट द फर्स्ट नंबर विच इज़ द 12 1010 1010. Second number is 111, so that is 111, and we have to multiply it by a simple multiplication. So 0 multiplied by 1, the answer is 0. This 1 multiplied by 1, it is 1. 1 multiplied by 0, there is 0. 1 multiplied by 1, it is 1. So first position will be a 0, or we can write a x. Second number is 1, so 1 multiplied by 0 is 0. This 1 multiplied by 1 is 1. This 1 multiplied by 0, it will be a 0. This 1 multiplied by 1, it will be a 1. So in next step we are taking the first two position as a 0. Third bit is again 1. So 1 multiplied by 0 is 0. 1 multiplied by 1 is 1. This 1 multiplied by 0 is this 0. 1 multiplied by 1 is 1. So after that we solve it. This will be a 0. 0 minus 1. This will be a 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is 1. We take the addition. So 1 plus 0, this 1. This 1 plus 1 is 0. Carry forward. 0 plus 0 is 1. 1 plus 1 0. 1 is carry forward. 1 plus 1 is 0. 1 is carry forward. So it is taken as it is. So we will get the result in the binary form, but that is not a final answer. So this is the step number 2. We are taking the simple multiplication by applying the multiplication rule. Then the third step says that which is the result you get, which is in the binary form. So we have to convert that binary form into the equivalent octal form. So that is the final answer. So we have to convert this binary number into the octal number, जो कि हमारा कन्वर्जन हो चुका है. हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू द ऑक्टल नंबर. तो आपको पता है कि ऑक्टल नंबर में जो ग्रुपिंग होता है वो 3 बिट्स का होता है. तो जो भी रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है, वी आर मेकिंग द ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द LSB टू द MSB, means from left to right we are grouping this number. So first is starting from this 0 1 1 1, that is the group 1. Next one is 0 0 0, that is the group second, and third one is 1. So we are taking 2 zeros. ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 एक्स्ट्रा जीरोज ऐड करेंगे तो उससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो दैट इज़ द थर्ड ग्रुप. ओके, एंड देन वी आर राइटिंग द इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर. 110 मीन्स 6. ठीक है, देन 000 मीन्स इट इज़ 0,
and last one 001 means this is 1. So 106 is the final answer of multiplication which is in octal form. Okay, you can also check it by using a simple multiplication. The both answer will be matched, so this is the final answer. So in this way we can perform the multiplication by for a octal number system. तो इसका प्रैक्टिस कीजिए आप। तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन लेंगे। सो थैंक यू।